Good morning, student. Today we are discussing the next topic, that is dynamics of simple harmonic motion. Dynamics means what is the reason of this simple harmonic motion. Now, in the last lecture we have discussed simple harmonic motion is the to and fro motion in which a body moves under a restoring force, and that force is always act toward the mean point. Right, student? Now, before discussing its dynamics, I am discussing three types of equilibrium. Whenever a body is displaced from its position, whenever a body is displaced from its position, then there are three types of equilibrium. One is neutral equilibrium. What is neutral equilibrium? क्या होता है ये neutral equilibrium? In this equilibrium, the external force which you have applied, right? Whenever you have applied external force, then it comes to the new position, that is O dash, right? And it will come to rest at this position. It will come to rest at O dash. It means this external force is balanced by some other force. If the body, if you have displaced it, and at the new position, if the body comes to rest, if body comes to the state of rest, it means this external force is balanced by some other force, and net force acting on the system is, net force on the mass is 0. That's why the body is come in the state of rest. तो इसको हम कौन सा इक्विलिब्रियम बोलते हैं? दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. सेकेंड इज unstable equilibrium. What is this unstable equilibrium? In the unstable equilibrium, if we apply the force on this body, external force, and the body continue to move in this direction, body क्या है? Continue है ये move इस direction में, तो इस equilibrium को हम क्या कहेंगे? This is unstable. Body is moving in the direction of external force, right? Now the third is stable equilibrium. What is this stable equilibrium? In this the body or on the mass, the external force is applied, but what happens? A restoring force is developed in it, due to which it come back to its original position. Which force is generated? Restoring force. And due to this force, it moves to and fro. And how this restoring force is produced? This restoring force is produced due to gravity, that we will discuss after this topic, due to elasticity like in spring, right, etc., or due to electrostatic force. So this type of equilibrium is called as stable equilibrium. And now we know that a body is, to understand this dynamics, we know that what is the necessary condition for simple harmonic motion? F equal to k into y. And we know that what is F equal to mass into acceleration. And what is the acceleration? That we have already calculated in characteristic of simple harmonic motion, minus omega square into y. So equate these two relation. It become m into acceleration is equal to minus of, this is k into y, that is minus m omega square y is equal to minus k into y. This is y. माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, y से y कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर इज k अपॉन, दिस इज इक्वल टू k अपॉन m. Here k is called as a force constant, right, and m is called as mass. इसमें हम इस टर्म का नाम देंगे, this is spring factor and this is inertia factor. This implies omega is equal to under the root of k upon m, and you can write it as 2 pi upon t. This is 2 pi upon t is equal to under the root of k upon m. तो t कितना आ जाएगा? This t is equal to 2 pi under the root of m by k. What is this? T equal to 2 pi under the root. M is called as inertia factor. I dot f inertia factor. K is called as spring factor. So the time period is defined. पीछे हमने डिवाइड किया था टाइम पीरियड को, 2 pi is equal to 2 pi under the root of displacement divided by acceleration, right? यहाँ हमने इसको इस तरह से डिफाइन किया था.
अब यहाँ हमने डिफाइन किया T इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट ऑफ इनर्शिया फैक्टर डिवाइड बाय स्प्रिंग फैक्टर. So in the dynamics you will explain only this thing. Next is simple pendulum. Very important topic. In simple pendulum, what is this simple pendulum? It consists of an inextensible thread which is connected to a rigid support. Inextensible means जिसमें extension produce नहीं होगी. Inextensible, weightless and perfectly flexible string. तीन चीजें हम लेंगे. Inextensible, flexible and massless string which is connected to a heavy point mass, right? When it is displaced from its mean position, then what happens? All of you know, it starts vibrating simple harmonically. Now we will prove it that it executes simple harmonic motion. We have to prove that this pendulum में क्या है? This inextensible, flexible and massless string which is connected to a heavy point mass which is called as a bob. Now we have to prove here that this simple pendulum executes simple harmonic motion. To prove this, what we will prove? We will prove F is directly proportional to Y या F is directly proportional to displacement. ये prove करेंगे आप. Anything you can write F is directly proportional to X or any F is directly proportional to Y. Up to prove this, you will take this as a thread of length L. When it is displaced from its mean position, what are the forces acting on it? Its weight is acting downward. Let this string is displaced to the angle theta. So tension is acting toward the fixed end. Now if you say these are the two parallel lines, so if this angle is theta, this is also theta, right? Now you can resolve, or you can say this angle is also theta. Resolve this weight along two component. This is mg cos theta and this is mg sin theta. Now see which force is acting toward the mean point. इस point की तरफ कौन सा force लग रहा है? mg sin theta. So here restoring force is provided by the component of weight, that is mg into sin theta, and you will take here negative sign because it is acting toward mean point. Now if this angle theta is very small, so you can replace this by theta sin theta. ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा. If theta is very small, then sin theta is approximately equal to theta, right? Now this is minus mg into theta. थीटा को आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस. अगर ये हम कहें डिस्प्लेसमेंट x है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? x, और लेंथ ऑफ आर्क इज x एंड रेडियस इज l. अगर आप ये पूरा इस तरह से ये सर्कुलर मोशन में इसको कंसिडर करेंगे लाइक इन दिस वे, तो ये लेंथ ऑफ आर्क बन गई और ये क्या बन गया? रेडियस. सो इट इज लेंथ, एंगल थीटा इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, राइट? नाउ दिस इज F इक्वल टू माइनस mgx अपॉन L. थीटा क्या है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस. Arc is x and radius is L. So now if you compare it with standard equation, तो अब हमने यहाँ क्या प्रूव कर दिया? F is directly proportional to x. ये that we want to prove. For the simple harmonic motion, F is directly proportional to x. This means simple pendulum executes simple harmonic motion. ठीक है. अब हम इसमें निकालेंगे इसका टाइम पीरियड. तो अब F इक्वल टू, इसको कंपेयर करते हैं, मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1. तो F इक्वल टू क्या है? माइनस के एक्स. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, तो माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम जी इंटू एक्स डिवाइड बाई एल. दिस गेट कैंसिल आउट विद नेगेटिव साइन, राइट? तो के कितना आ गया? दिस इज एम जी डिवाइड बाई एल. के इज एम जी डिवाइड बाई एल. स्टूडेंट्स अभी हमने डायनामिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन पढ़ा है. दिस इज 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m डिवाइड बाई के. m क्या है? इनर्शिया फैक्टर. k क्या है? स्प्रिंग फैक्टर. k वी हैव कैलकुलेटेड हेयर. व्हाट इज दिस? दिस इज द स्प्रिंग फैक्टर. दिस इज स्प्रिंग फैक्टर. एंड व्हाट इज द मास ऑफ द बॉब? इट इज m. तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ
एम एम जी डिवाइड बाय एल। एम से एम क्या होगा, कैंसिल आउट, और टी क्या आ गया, 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल अपॉन जी। तो यहाँ पर टी इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई अंडर द रूट एल अपॉन जी। एल इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, टी इज independent. First, it is independent of mass of the bob. It directly proportional to the length of pendulum. और यहाँ effective length of pendulum आप कहाँ से लेंगे, यहाँ center से, right? Length of pendulum is radius of the bob, radius of bob plus length of thread, length of thread from the point of suspension. You have to take this is the total length from the center of mass. यहाँ से आप लोगे तो इसका radius plus ये जो length है, this is the effective length, right? If L increases, the time period also increases. T is directly proportional to L and T is inversely proportional to G. If you bring this pendulum on हिली एरिया और इन हाई एल्टीट्यूड्स, अगर आप इसको हाइट पे ले जाएं, एज हाइट इंक्रीजेस जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेस। अगर आप इसको एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड पे ले जाएं तो ये जी की वैल्यू डिक्रीज और टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज। फिर आता है इसमें हम स्पेशल केसेस करेंगे, सेकेंड्स पेंडुलम। क्या आता है नेक्स्ट, सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम क्या होता है, ये सेकेंड्स पेंडुलम, इट इज दैट पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड, ये फिक्स्ड है। इट इज दैट पेंडुलम, it is that pendulum whose time period is 2 seconds. कितना है इसका टाइम पीरियड, 2 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट ऑफ l अपॉन जी। यहाँ से हम लेंथ ऑफ पेंडुलम निकालेंगे, 2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट ऑफ l अपॉन जी, कितना है 9.8, ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 1 अपॉन पाई इक्वल टू रूट l अपॉन 9.8। तो स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स करोगे तो ये आएगा 7, दिस इज 1 अपॉन पाई इज 22/7, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 22 स्क्वायर इज इक्वल टू l अपॉन 9.8। तो जब आप यहाँ से l फाइंड आउट करोगे, इट कम्स आउट टू बी 99.3, इट इज 99.3 centimeter. It is 99.3 centimeter. So this question is asked, what is the length of seconds pendulum? It is 99.3 centimeter and its time period is 2 seconds. फिर आता है, if this pendulum is brought in space or in satellite, if the pendulum is placed in satellite, तो वहाँ जी की वैल्यू क्या हो, हम मान के चलते हैं 0, ठीक है। तो टी कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल अपॉन 0, दिस इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इफ दिस पेंडुलम, नेक्स्ट केस इज दिस, यू कैन टेक केस 2, सेकेंड पेंडुलम वाला आप केस 1 ले सकते थे, दिस इज केस 1। केस 3, इफ दिस पेंडुलम इज प्लेस्ड इन अ लिफ्ट विच इज मूविंग अप, इफ pendulum is placed in a lift moving up with an acceleration a, तो वहाँ पर इसका टाइम पीरियड कितना होगा। देखो, अगर ये लिफ्ट है तो लिफ्ट में अगर ये पेंडुलम है या कोई भी मास है तो हम ये कहते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन अप, वेट डाउनवर्ड, और एक्सेलरेशन अप है तो इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है आर माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, तो आर इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, राइट। तो अगर हम कहें कि व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन, तो एम ए इज इक्वल टू एम इंटू जी ए डैश, जी प्लस ए, तो इसका अपेरेंट एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, जी प्लस ए। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल अपॉन जी प्लस ए, राइट। इफ इट इज मूविंग डाउन, if lift is moving, सेकेंड के इसी में lift is moving down, तो आपका केस यहाँ 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल डिवाइड बाई जी माइनस ए, इसी तरह ही आप इसमें
फाइंड आउट करोगे. सो दीज आर द फ्यू स्पेशल केसेस विच यू हैव टू डिस्कस्ड इन द सिंपल पेंडुलम, राइट. और अगर आपकी जो लिफ्ट, ओके, इतना ही सफिशिएंट है इसमें. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.